Question number 31 is the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining the points A 4,5 and B -2,3 is option A 2x minus y plus 7 is equal to 0, option B 3x plus 2y minus 7 is equal to 0, option C 3x minus y minus 7 is equal to 0, and option D 3x plus y minus 7 is equal to 0. Now the solution will be like, see, we have 2 points A and B. The coordinates are given as, the coordinates are 4, 5, and for B we have -2, 3. If we join these 2 points with the line segment, we have to find the equation of perpendicular bisector of this line segment AB. So the perpendicular bisector will be a line like this. Okay. Now see, because the line is a perpendicular bisector, so if we choose any point here P, suppose the coordinates will be x, y, then the distance of that point from A and B will be equal, isn't it? So we'll say that the distance AP is equal to distance BP, or we can write AP square is equal to BP square. This will imply what will be AP square? That will be x minus 4 whole square plus y minus 5 whole square. That will be equal to x plus 2 whole square and plus y minus 3 whole square. This will imply x square plus 16 minus 8x plus y square plus 25 minus 10y will be equal to x square plus 4 plus 4x plus y square plus 9 minus 6y. Now see, this x square y square will get cancelled with x square y square. Here we have minus 8x, here we have plus 4x. So we'll shift all these values on the left hand side to the right hand side. We'll get 8x plus 4x, that is 12x, and then minus 10y minus 6y. So we'll get plus 10y minus 6y, that is plus 4y. And here we have 16 and 25. Here we have 4 and 9. So 16 plus 25 will be equal to 41. It will become minus 41. Minus 41 plus 13. Minus 41 plus 13 will be equal to 0. This will imply 12x plus 4y and 11 minus 3. That will be 8. Okay, so 8 and 3 minus 1 will be 2, will be equal to 0. So if we take 4 common from here, we'll get 3x plus y minus 7 equal to 0. Therefore the equation will be 3x plus y minus 7 will be equal to 0. That is our option number D. So option number D is the correct option. Question number 32 is, in the given figure, D is the midpoint of BC, then the value of cot y upon cot x is option A 2, option B 1 by 2, option C 1 by 3, option D 1 by 4. Now let us look at the figure. We have a triangle A, here we have B, this is C, and we have drawn another line D, such that D is the midpoint of BC. This angle is x degrees and this overall angle is y degree. Okay, we have to find the value of cot y degree upon cot of x degree and this angle is obviously 9 degree. Now see, if we consider the triangle ACD, so in triangle ACD with respect to this angle x degree, cot x will be equal to base upon perpendicular, so base will be AC. So we can write here AC upon perpendicular, that is CD, divided by, sorry, this will be written here in the denominator, cot x is in the denominator now, so AC upon CD, not in the numerator. In the numerator we have y, cot of y degree. So if we consider triangle ABC, in triangle ABC angle CAB is y degree. So with respect to y degree,
our base will be AC only but the perpendicular will be BC. ठीक है, so here we'll write base is AC upon perpendicular is BC. Now AC and AC will get cancelled, so this will be equal to CD upon BC. अब CD upon BC, now we know that CD is half of BC, है ना, तो या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि BC is double of CD, so I'll write BC as 2 times of CD, so CD and CD will get cancelled, it will be equal to 1/2. That is the correct option will be option number B. Question number 33 is the smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places is option A 13/100, option B 13/10, option C 10/13, option D 100/13. Now see the question is, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि उसका जो डेसिमल नंबर हो ना वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाए. ठीक है, सो हियर विल बी 0 पॉइंट और मींस एनी नंबर, हियर इट विल बी एनी नंबर पॉइंट 2 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाना चाहिए, खत्म कर जाना चाहिए. ठीक है, तो देखो 13 तो सबसे पहली बात डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए, सो इन द न्यूमरेटर वी मस्ट हैव 13 and because we want the smallest number so we'll divide it by 100. so 13 और 13 कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 0.01. okay, 1/100 that will equal to 0.01. so the number will be 13/100. Therefore option number A 13/100 is the correct option. Question number 34 is sides AB and BE of a right triangle right angled at B are of length 16 centimeter and 8 centimeter respectively. The length of the sides of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE is option A 32/3 centimeter, option B 16/3 centimeter, option C 8/3 centimeter, option D 4/3 centimeter. Now let us take the triangle AFD and the triangle DGE. इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं. देखो इस ट्राइंगल में एंगल F 9 डिग्री है, यहां पर एंगल G 90 डिग्री है. नाउ इन ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल DGE, तो यहां पर ये दो एंगल्स तो 90 डिग्री हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया, एक और एंगल अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, so these two triangles will be similar. Now see this angle is also 9 degree because it is one of the angle of a square. ठीक है, तो if we take the sum of this angle plus 9 degree plus this angle, it will be equal to 180 degrees, and the sum of this angle, for example if I'm taking this angle as angle 1, this is angle 2, so we can say angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. And also because angle A, angle B and angle C, angle E are the vertices, or we can say the angles of a triangle, so their sum will also be equal to 180 degrees. because angle B is already 90, तो एंगल A और एंगल E का सम भी एंगल A प्लस एंगल E इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना. तो अगर इन दोनों का सम दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 9 डिग्री और इन दोनों का सम 9 डिग्री इक्वल है, और इन दो ट्राइंगल्स में भी ये दोनों का एंगल 9 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, देखो हियर वी कैन से इन ट्राइंगल AFD, इन ट्राइंगल AFD एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इस ट्राइंगल में एंगल 2 प्लस एंगल E विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. दैट वी नीड नॉट सॉल्व. ठीक है, इससे ही आंसर आ जाएगा, इससे ही मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A. एंगल 1 और एंगल A के बीच एक रिलेशन फाइंड कर लिया हमने. तो एंगल A की जगह, अब देखो इसको अगर मैं प्रोसीड करूं, सॉरी इसको अगर मैं प्रोसीड करूं, एंगल 1 की जगह मैं लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री.
So these two 90 degrees will get cancelled. This will imply angle A is equal to angle 2. Similarly, we'll get angle 2 will be equal to angle A. ठीक है? Sorry, angle 2 is equal to angle A we got ना. Similarly, we'll get angle 1 equal to angle E. तो ये जो दो एंगल होते हैं ना, this angle and this angle, these two are equal and angle 2 is equal to angle A. So we'll say here angle in triangle AFD, angle AFD is equal to angle DGE equal to 90 degree both, and here we say angle FAD is equal to angle GDE as we have proved this. Okay, so therefore we can say triangle AFD, if we are taking triangle AFD, that will be similar to triangle. Now AFD will be similar to, यहां पर अगर एंगल A ले रहे हैं तो यहां पर वो एंगल D के इक्वल है. सो इन प्लेस ऑफ A here will be writing D. ठीक है. एंगल F 90 डिग्री है तो यहां पर एंगल G 90 डिग्री है. यहां पर एंगल D will be equal to angle E, so here we'll write angle E. Now we can write, because these two triangles are similar, therefore AF upon DG will be equal to FD upon GE will be equal to AD upon DE. This will imply, now what is AF? AF we do not know. DG, DG is one of the side of the triangle of the square. Okay, so let it be as it is. Now we have FD. FD is also X, and GE. GE we do not know. And we have AD and DE. AD and DE. So I think we do not know, do not need this thing AD upon DE. Okay. Now let one side or each side you can say of the square be X. हमने स्क्वायर के हर एक साइड को X मान लिया. So here we can say AF. AF will be equal to, because this is X, so AF will be equal to 16 minus X. So we'll write here 16 minus X upon DG. DG is X. That will be equal to FD. Now FD is, this is FD, again X upon GE. GE will be, because this is X, so GE will be equal to 8 minus X. So this will be equal to 8 minus X. Now let us solve this equation to find the value of X. That is what we want. So we can write this as 16 minus X upon X is equal to 8 X upon 8 minus X now. So we can cross multiply it to write X square will be equal to 16 minus X multiplied by 8 minus X. 16 minus X multiplied by 8 minus X. So this will be X square is equal to 16 times 8 minus 16X minus 8X and plus X square. So this X square and this X square will get cancelled. This will imply here we'll be having 24X will be equal to 128. This will imply X will be equal to 128 upon 24. So we can cancel it by, let us cancel it by 2. So we'll get here 64 na. So again 4 3s are 12 and 4 in the table of 4 we'll get it in the 4 1s are 4 4 6s are 16 4s are 64. So we are getting X as 16 by 3. Okay, therefore we are getting, this will imply like X is equal to 16 by 3. Now let us check the options. Yeah, the option is 16 by 3 is option number B. So option number B is the correct option. Question number 35 is, point P divides the line segment joining R minus 1, 3 and S 9, 8 in the ratio K is to 1. If P lies on the line X minus Y plus 2 is equal to 0, then value of K is option A 2 by 3, option B 1 by 2, option C 1 by 3, option D 1 by 4. Now let us look at the solution. बोला जा रहा है हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक है R और एक है S. So the coordinates of R is minus 1, 3 and the coordinates of S is 9, 8. ओके, क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट P है जो इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो K is to 1. सो सपोज वी हैव P हियर.
P is dividing it in the ratio of K is to 1. Okay, and P is also lying on a line. Suppose this is a line, P is lying on the line x minus y plus 2 equal to 0. Then we have to find the value of K. Now see, we can find the coordinates of P using section formula. So the x coordinate of P can be written as x will be equal to k times 9 or 9k plus 1 times minus 1, that is minus 1, divide by k plus 1. Okay, I'm doing it directly. And y coordinate of P will be equal to 8k plus 3 upon k plus 1. Now because these are the coordinates of P और P x minus y plus 2 equal to 0 लाइन पे लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई द लाइन, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं पुट कर देता हूं x की जगह 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस y के जगह मैं पुट करूंगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 plus 2 is equal to 0. This will imply 9k minus 1 minus 8k minus 3 plus 2k plus 2 is equal to 0. Now we have to solve this. So 9k minus 8k, that is k plus 2k, 3k, and here we have minus 1 minus 8 is minus 4 plus 2. Minus 4 plus 2 will be minus 2, will be equal to 0. So this will imply k will be equal to 2 by 3. That is our option number A is the correct option. Question number 36 is, in the given figure below, ABCD is a square of side 14 centimeter with E, F, G and H as the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. The area of the shaded portion is option A 44 centimeter square, option B 49 centimeter square, option C 98 centimeter square, option D 49 pi by 2 centimeter square. Now let us discuss the solution. देखो कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है. We have a square और स्क्वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. Here we have a quadrant, यहाँ पर भी क्वाड्रेंट है और यहां पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है. ठीक है, दिस सेमी सर्कल इज टचिंग द टॉप ऑफ दिस टॉप साइड ऑफ द स्क्वायर. ओके, एंड ऑल दिस एरिया, ऑल दिस रीजन इज शेडेड. ओके, वी हैव दिस वर्टेक्स एज A, B, C, D, then E, this point is E, then F, G and H. Okay, the side of the square is given as 14 centimeter. Okay, we have to find the area of the shaded portion. Now see, because this side is equal to 14 centimeter and this is the quadrant of the circle, so the radius of the circle will be equal to 7 centimeter. Here also 7 centimeter, isn't it? Now see, we will divide this square into two parts. सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल CFHD. इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CFHD विल बी इक्वल टू, देखो इसका जो लेंथ है वो 14 होगा और इसका जो ब्रेथ होगा वो यहां से यहां तक सिर्फ 7 हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाई 7. ओके, सो और देखो यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, यहां पर भी एक क्वाड्रेंट है, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है. दो क्वाड्रेंट का एरिया को ऐड करके इस रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ यू कैन से क्वाड्रेंट. ओके, क्वाड्रेंट निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेट इट बी एज पाई ओनली. ओके, पाई आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, दैट इज 7 7 49. सो इट इज 49 पाई बाई 4. Okay, now we will multiply it with 2. Therefore 2 multiplied by area of quadrant
will be equal to 49 pi by 2. If we multiply it by 2, 2 will cancel this 4 in 2 times, so 49 by 2. ये हो गया एरिया. Now we'll subtract the area of this semicircle or two quadrants from this rectangle to find the area of shaded portion in this region, in the region CFHD. Therefore, now area, or you can say area of shaded region in CFHD will be equal to 14 multiplied by 7 minus 49 pi, or we can write this 49 by 2 multiplied by 22 by 7, and 7 times 7, 2 times 11, so 98 minus 77, that will be equal to 1 and 2, 21. So here the area of this much of shaded portion is 21 centimeter square. ठीक है. अब सिमिलरली इसका जो एरिया होगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFH. ठीक है. और यहां पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर इसका भी एरिया फाइंड करेंगे. और यू कैन से वी डू नॉट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. हालांकि चलो फाइंड ऑटोमेटिकली किया हुआ है. हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया को ऐड कर देंगे. ठीक है. रेडियस तो सेम ही है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आया था अभी हमारे पास, देखो सेमी सर्कल एरिया 49 पाई बाई 2 आया. तो 29 में हम क्या करेंगे, 49 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 49 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 बाई 7, 7 7 जा 49, 77 ऐड कर देंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन will be equal to 21, that is the area of shaded portion in the lower rectangle, plus area of shaded portion, that is the semicircle only, that will be equal to 77. So that is nothing but 98 only. Okay, so 98 centimeter square. So the correct option will be option number C, 98 centimeter square. Question number 37 is given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the points of intersection of 2 circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted regions assuming the thickness of the rings to be negligible is option A 4 times pi upon 12 minus root 3 by 4 centimeter square. Option B pi by 6 minus root 3 by 4 centimeter square. Option C 4 times pi by 6 minus root 3 by 4 centimeter square. And option D 8 times pi by 6 minus root 3 by 4 centimeter square. Now let us discuss the solution. Solution में क्या बोला गया है, देखो we have 5 congruent circles. फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, और यहाँ पर है एक ये फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. ओके, सो टोटल 5 सर्कल्स है हमारे पास. दीज आर द डॉटेड रीजन्स. ओके, तो इन डॉटेड रीजन्स का ही हमें एरिया निकालना है. अब क्या बोला जा रहा है कि हर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हर एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और ये जो कॉर्ड लेंथ है ना वो भी 1 सेंटीमीटर का है. हर एक में कॉर्ड लेंथ 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, हियर आल्सो 1 सेंटीमीटर, और सारे सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स. नाउ सी, डॉटेड रीजन्स का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, we know that the chord length for this, let us assume the first circle. तो फर्स्ट सर्कल में ये जो chord है वो A और B पॉइंट पर सर्कल को कट कर रहा है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है. सो इफ वी ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ A एंड B, ठीक है, तो वी कैन से लाइक दिस पार्ट,
ठीक है, जो लोअर पार्ट हो गया ना कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ माइनर सेगमेंट, इजंट इट? ये जो एरिया होगा वो हम फाइंड करेंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर ये एरिया निकल गया तो इसका दोगुना कर देंगे ताकि ये एरिया भी निकल जाए, ठीक है। और अगर एक बार ये एरिया निकल गया तो उसका हम 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो सारे का एरिया निकल जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सपोज दिस इज द सर्कल, this is a chord of length 1 centimeter, radius is also 1 centimeter, so this is an equilateral triangle and we have to find the area of this segment at first, ठीक है, this is OAB, so we'll find area of minor segment is equal to, अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर विल बी 60/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी √3/4 a square, a is equal to 1 only, okay, that is equal to r also, this is equal to 1/6 into, let it be as pi, multiplied by r is 1 square, minus √3/4 times 1 square, okay, so we got pi/6 minus √3/4 as the area of this segment. So if we multiply it with 2, therefore area of dotted region between any two circles will be equal to 2 times pi/6 minus √3/4, that will be equal to pi/3 minus √3/2 you can say, ठीक है। therefore अब अगर मैं इस एरिया को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास, therefore we can say required area will be equal to 4 times pi/3 minus √3/2, okay, or by checking the options we can say that will be equal to option number D, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के इक्वल कैसे है, क्योंकि यहां पर ना जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया है वहां पे कैंसिल नहीं किया है, और यू कैन से वी विल डिवाइड और मल्टीप्लाई इट विथ बाई 2, ओके, विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। सो अगर मैं यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 8/2, तो मैंने यहां पे लिख दिया चलो 8/2, ओके, जस्ट अ मिनट, this will be 8/2 and I'll multiply that 2 with this 6 here to write 6, 2 multiplied by 3 will be 6 and 2 multiplied by 2 will be 4. So now this exactly matches with the fourth option, 8 times pi/6 minus √3/4, that is option number D. Question number 38 is, if 2 and 1/2 are the zeros of px square plus 5x plus r, then option A, p is equal to r is equal to 2, option B, p is equal to r is equal to -2, option C, p is equal to 2, r is equal to -2, option D, p is equal to -2, r is equal to 2. Now let us discuss the solution of this question. देखो बोला जा रहा है हमारे पास एक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, and the zeros are given as 2 and 1/2. Now see, it means if we put the value of x as 2 it will satisfy the equation. तो इसका मतलब p into 2 square plus 5 into 2 plus r will be equal to 0, and if we also put the value of x as 1/2 again it will satisfy the equation, that is p 1/2 का square plus 5 times 1/2 plus r will be equal to 0. Now both the equations can be solved to get new equations like 4p plus 10 plus r equal to 0, and here we'll get p/4 plus 5/2 plus r will be equal to 0. Now if we subtract these two equations, so on subtraction r and r will get cancelled, here we'll be getting 4p minus p/4 plus 10 minus 5/2.
10 minus 5 by 2, that is 7.5 will be getting. Okay, so plus 7.5 will be equal to 0. So here we'll get 16p minus p, that is 15p upon 4 is equal to minus of 7.5, or 75 upon 10 you can also write. 5 times 15 times 5 is 75, and 2 times 5 times 5 cancelled, so p we are getting 2. Okay, we are getting p as 2. Now let us put the value of p in any of the equation. So here in the first equation we have 4p plus 10 plus r equal to 0. If we put the value of p as 2 here, we'll get 4 times 2 is 8. तो यहाँ पर आ गया 8 plus 10. Oh sorry, here we have a negative sign also na, so this will be minus 2. P will be equal to minus 2. Okay, we forgot the negative sign. Now if we put the value of p as minus 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 into minus 2, that is minus 8. Minus 8 plus 10 will be equal to 2. So r will be equal to minus 2. Therefore we can write q is also equal to minus 2. So the correct option will be option number B, that is p is equal to q is equal to minus 2. Question number 39 is, the circumference of a circle is 100 centimeter. The side of a square inscribed in the circle is option A 50 root 2 centimeter, option B 100 upon pi centimeter, option C 50 root 2 upon pi centimeter, and option D 100 root 2 upon pi centimeter. Let us discuss the solution of this question. देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 100, that is 2 pi r is given as 100 centimeters. So this will imply 2r will be equal to 100 upon pi centimeter. अब मैंने 2r क्यों फाइंड किया? देखो अगर हम एक स्क्वायर इसके अंदर सर्कम इंस्क्राइब करेंगे, if we just draw a diagonal of this square, तो ये जो diagonal होगा that will be equal to the diameter of this circle, or diameter is equal to 2r. So we got diagonal, this implies diagonal of square is equal to 100 upon pi. Okay, now diagonal of square क्या होता है? root 2 times side is a, root 2a is the diagonal of a square. अगर square का side a units मानते हैं हम, तो उसका diagonal कितना होता है? root 2a होता है. So in place of diagonal of square we have written root 2a, where a is side of the square, is equal to 100 upon pi. So this will imply a will be equal to 100 upon root 2 pi centimeters. So we wanted the side of the square, so we got 100 upon root 2 pi. So the correct option will be, or see, we can actually solve this also. We can solve it by rationalizing it. So we'll rationalize it with root 2 upon root 2. We'll get 100 root 2 upon 2, that will be equal to upon pi also. So this will be equal to 50 root 2 upon pi centimeters. So this will be our option number C. Option number C is the correct answer. Now question number 40 is, the number of solutions of 3 to the power x plus y is equal to 243, and 243 to the power x minus y is equal to 3 is option A 0, option B 1, option C 2, option D infinite. Let us discuss the solution of this question. Now the first equation is 3 to the power x plus y is equal to 243. Now देखो 243 को हम लोग लिख सकते हैं 81 times 3. 81 can be written as 3 to the power 4 multiplied by 3, that is 3 to the power 5. ठीक है? So 3 to the power x plus y is equal to 3 to the power 5. This implies x plus y is equal to 5. This is our first equation. Now we have 243 to the power x minus y is equal to 3. We can write it like 3 to the power 5. 243 can be written as 3 to the power 5, and here we have x minus y also, that will be equal to 3 to the power 1. This implies 5 times x minus y is equal to 1. This implies x minus y is equal to 1 upon 5. This is our second equation. Now
if we add these two equations, this is our first equation, this is our second equation. So I'm writing the second equation here, x minus y is equal to 1 upon 5. If we add these two, y and minus y will get cancelled. We'll get 2x is equal to 5 plus 1 by x. This will imply x will be equal to 26 upon 10. Okay, and y will be equal to, now we need to solve this. If we put the value of x as 26 upon 10, y will be 26 upon 10 minus 2 upon 10, that will be equal to 24 upon 10. So we are getting only one value of x and only one value of y. Therefore, the number of solutions will be only one. So the correct option will be option number B.